After being shut for the public for 5 months due to the COVID lockdown, metro train services have finally resumed in a staggered manner across the country. In Delhi, the first metro departed from Huda city centre, this is in Gurugram, to Delhi University at 7 this morning. As part of the Phase 1 operation, Delhi metro services have been resumed only on the yellow line and will operate in shifts, which is 7 a.m. to 11 a.m. and then 4 p.m. to 8 p.m. Now, on September 9th, blue and pink line will start operating, and by September 12th, all the Delhi metro lines will be made operational for commuters. The Delhi Metro Rail Corporation has made arrangements keeping the COVID pandemic in mind. Apart from earmarked gates and hands-free thermal scanners, 1,000 additional officials have been deployed to assist commuters. The carrying capacity of trains has been reduced to 20% now. Metro services have resumed not just in Delhi but in other major cities such as, of course, Noida, Gurugram. You also have Lucknow, Chennai, Kochi, Hyderabad and Bengaluru. कॉस्ट कटिंग चल रही है हर कंपनी में, सिर्फ ट्रैवल अलाउंस और ट्रैवलिंग तो दे नहीं रहे मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक्सेप्ट फॉर द ह्यूज एमएनसीज. सो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी ट्रैवलिंग में, एंड दे वांट यू टू कम टू ऑफिस ऑल द टाइम. सो इसमें डेफिनेटली बहुत राहत मिला है, पर वही है कि हर रूट में अभी तो नहीं चल रहा है. वील कम टू नो इन द डेज आफ्टर दिस कि सारे रूट्स में चलेगा कि नहीं, तो उसके बाद तो डेफिनेटली इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. बाई बस ज्यादा था सर, बाई मेट्रो थोड़ा इजी हो जाएगा, टाइम की बचत हो जाएगी थोड़ा. और रोड पे ट्रैफिक हैवी रहता था कभी कभी, तो उससे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा सर, टाइम बच जाएगा. क्योंकि पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हमें एक्सपेंस भी ज़्यादा करना पड़ता था और सेफ भी नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था. अब वो सारी सेफ्टी हमें मिलेगी. जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है जो अपना मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, अगर उनको फॉलो करते हैं तो सेफ्टी के साथ बाय रोड से ज़्यादा सेफ है. Let's take this across to our reporters on the ground. We've got Sushant Mehra live from Rajiv Chowk, which is usually one of, in fact, the busiest metro stations in Delhi. Shalini Lobo is joining us live from Chennai. She is at the Katipara metro station. And we've got Nolan Pinto from Bengaluru at the MG Road metro station. Let me take this across to Sushant Mehra first. Sushant, for viewers who are watching this broadcast, just let us know how travelling in the metro will be very different from how it was earlier. मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दिल्ली के अंदर मेट्रो एक बार फिर से जो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है वो उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा. और मेट्रो के अंदर अगर आप एंटर करते हैं तो उससे पहले गेट्स पर आपको इस तरीके से सैनिटाइज अपने आपको करना पड़ेगा, अपने हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप मेट्रो के अंदर सफ़र जो है वो कर सकते हैं. काफ़ी अरसे बाद, 6 महीने बाद अगर कहा जाए तो मेट्रो खुली है दिल्ली वालों के लिए. अंकल, ये बताइए कि कितनी राहत जो है वो आपको मिली है मेट्रो में? देखिए, पहली राहत तो ये है कि ये सुरक्षित है और ये इन्वायरमेंटल के दृष्टिकोण से अच्छा है और साफ सफाई है और इजी है और चीप भी है. पहले कितनी परेशानी हो रही थी अनलॉक के में, जब ओपन हुआ उसके बाद मेट्रो पूरी तरह से बंद रही, किस तरह से आप ट्रैवल करते थे, ऑटो से या बस से? कितना उसमें दिक्कत हुई, समय का वेस्ट होता था और साथ में मतलब पैसे भी ज़्यादा लगते थे. और इससे तो इजी तो मिलेगी, लेकिन जब पूरी तरह खुले तो और अच्छा रहे. आपको कितना ट्रैवल करते हैं दिल्ली में और कितनी परेशानी हो रही थी? मेट्रो ओपन हुई है. मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो हाँ प्रॉब्लम हो रही थी. ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो मेट्रो कंपैरेटिवली सेफ रहती है वुमेन के लिए वैसे भी, तो वो प्रॉब्लम होती थी. और हम स्टूडेंट है तो वी आर नॉट अर्निंग, तो ओला वगैरह से जाना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता था. और सारे स्टूडेंट्स इस वक्त अवेलेबल भी नहीं है, तो अकेले ही जाना होता था ज़्यादातर. तो मेट्रो से ईज़िली पहुंच जाते हैं, सेफ भी है और मनी फ्रेंडली तो है ही. अभी फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको एक बड़ी राहत है, क्योंकि मेट्रो खुली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेयर जो है उनको लगता था. और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से मार्किंग जो है वो यहाँ पर फिलहाल की गई है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे, सैनिटाइजेशन का ड्राइव करें, उसके बाद ही जो है वो लोग मेट्रो के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं. और डिस्टेंस पर इस तरीके से जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं ताकि लोग पूरी तरीके से सुरक्षित जो है मेट्रो का सफ़र जो है वो कर सके. उसके बाद ही मेट्रो के अंदर जाने की इजाज़त जो है वो फिलहाल दी जा रही है.
Okay, Sushant, stay with us. Let me take this across to Shalini Lobo. Shalini, metro services have resumed in Chennai. While usually also you didn't see a lot of footfall at metro stations in the city. What's it like now? Are there people actually going ahead and taking the metro? Well, Akshita, metro services have resumed. As you can see, the trains are functioning. But yes, the footfall is very less. We did go to a station before we came to the Katipara bridge. But unfortunately, not many people are using the metro services. Yes, there are a few people. As you know, the connectivity isn't much in Chennai. There are just around 32 stations right now. But a few commuters were waiting for the metro rail services to operate. 7 a.m. is the first metro, 8 p.m. is the last metro. A lot of people earlier, around 60% of the commuters were relying on the token system. So now what they've done is they have ensured that the token systems are sanitized. However, cashless, contactless transactions are being encouraged by the people. So it's mostly asking them to use smart travel cards, or it's mostly asking them to use their phones and scan the QR code as well. So that is what the metro authorities have been planning. Apart from the metros, you also have the inter-district buses that are starting to function today in Tamil Nadu. So you can see increased traffic on the road, and probably as the traffic increases, you'll have more people using the metro services. Okay, so let's see how things pan out. Perhaps in the next few hours, you'll see a lot more people actually going ahead and taking the metro. Let me take it across to Nolan Pinto. Nolan, good morning. You're joining us from the MG Road metro station in Bengaluru, perhaps the biggest and most crucial one that connects most of the city and the other metro lines. What's the situation there? I want to understand if Bengalurians are actually going ahead and using the metro. Well, Akshita, I'm actually, like you rightly stated, at the Mahatma Gandhi metro station in the heart of the city. This is on MG Road. Now, the problem over here in Bengaluru is this. You have two lines. You have the purple line and you have the green line. So the purple line opens today from 8 to 11 in the morning and then 4:30 to 7:30 in the evening. The green line opens on the 9th. Again, that is from 8 to 11, 4:30 to 7:30. It is only from the 11th onwards that both the lines will be open right from morning to evening. That is the proper normal time. However, as of now, where I am, there was just one passenger. 8 o'clock is when it was open. The metro officials over here are using loudspeakers to inform people what are the rules and regulations. But only one passenger has actually come. Metro officials tell us that it will take some time for the people to actually believe that it will be safe for them to travel in the metro train. So today one can expect people to only come out in the evening and sort of try the metro once more to see if it's safe. All right. We'll keep coming across to you, Nolan, to you, Shalini and Sushant as well. For the moment, thank you for joining us with those live reports. You can see that a lot of steps have been taken precautions-wise, but as of now, commuters really not going ahead and using the metro as they normally would, and perhaps it will take a couple of days for the footfall to increase in these cities.